हाय गाइस व्हाट्स अप, इट्स मी आरती। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। एंड आज हमारा रेगुलर मंडे वीडियो नहीं है क्योंकि मुझे इस बारे में काफ़ी वक्त से बात करनी है एंड आई डिसाइडेड टू एड्रेस दिस टुडे। द प्रॉब्लम विथ द रोस्ट कल्चर एंड हेट कमेंट्स ऑन द इंटरनेट। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी कहा और मैंने पिछले एक लाइव में भी कहा था कि इट हैज़ बिन ऑन माई माइंड जब से द होल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब थिंग हैपेंड एंड आई वांटेड टू काइंड ऑफ एड्रेस इट देन, बट अब इतने सारे लोगों ने इतने सारे वीडियोस बना दिए अपने ओपिनियन के बारे में दैट आई काइंड ऑफ विड्रू। आई वाज लाइक ठीक है, लेट इट गो। बट ओवरऑल जेनरिक जो मेरा व्यू है अबाउट द रोस्ट कल्चर और अबाउट हेट कमेंट्स ऑन द इंटरनेट इज व्हाट आई वांट टू एड्रेस टुडे. And if you all agree with what I'm saying, hit the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon next to it, and let's begin the video. Before I start talking about what my problem is with the roast videos, पहले जिन लोगों को पता नहीं है ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि रोस्ट एज अ फॉर्मेट ऑफ कॉमेडी ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट। और इस फॉर्मेट के अंडर होता ये था कि जिस बंदे को या एक्टर को या आर्टिस्ट को रोस्ट करने के लिए बुलाया जाता था उनको उनके कंसेंट के साथ वोट किया जाता था। मतलब दे हैड गिवन द परमिशन टू पीपल टू इंसल्ट देम. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंसल्ट कॉमेडी एंड देन ऑन द शो और द एपिसोड और वट एवर और द इवेंट, this person then was given the chance to roast the other people who roasted him on the episode. So this was the whole format and of course then उसको बहुत अच्छी तरह से culminate किया जाता था उनके achievements and all के बारे में भी बात करके. So basically it was something done for entertainment. It's a form of comedy and that's how it came into being. But over the last few months or years actually it has taken a total different form on the internet. बहुत सारे creators अपने channel पर बहुत सारे roast videos डालते हैं consistently. Of course the whole part of taking consent from the person जिसको रोस्ट किया जा रहा है that has disappeared. वो मतलब चला गया पूरे फॉर्मेट से. एंड चलो for a second I'll consider कि ठीक है, this is a form of this is the content that people maybe want to watch, that's why maybe इतने सारे लोग बना रहे हैं. But what my problem is, most of these videos they aren't even funny. They are just full of such hateful, derogatory remarks, personal attacks, body shaming the person, commenting on how the person looks, makeup लगाना, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, पंक्चर ठीक करने वाले जैसी इसकी शक्ल है. मतलब the level of comments are so, they are made in such a bad taste and such a bad light कि वो देखते वक्त I start flinching कि why is anybody talking about anybody like this on a medium, on a platform as powerful as YouTube. I think people जो लोग रोस्ट भी कर रहे हैं और जो व्यूअर्स भी है जो ऐसे रोस्ट को सपोर्ट करते हैं इन मैसिव नंबर्स हैव समवेयर फॉरगॉटन कि जिन लोगों की तुम लोग आके बात करते हो दे आर नॉट जस्ट अ क्रिएटर, दे आर नॉट जस्ट अ यूजर नेम, दे आर ह्यूमन बीइंग्स इन फ्लैश एंड ब्लड. दे हैव फीलिंग्स. उन लोगों की खुद की एक लाइफ स्टोरी है, उन लोगों के पास ट्रॉमाज है, उन लोगों की लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स है जिनके साथ वो लोग डील कर रहे हैं. एंड ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट वाइल दे इवन इंटरेक्ट विद एनीबडी, एनी क्रिएटर ऑनलाइन, कि वो लोग भूल जाते हैं कि दिस पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग. एंड देन द काइंड ऑफ कॉमेंट्स दैट आर मेड एंड ऑल ऑफ दैट इज सेड कम्स फ्रॉम द लैक ऑफ एम्पैथी. मतलब अगर तुम एक रोस्ट वीडियो बनाते हो टॉकिंग अबाउट समबडी, कोई टिकटॉकर हो, कोई भी हो, कि तुम्हारी शक्ल ऐसी दिखती है, तुम इतने बिजली की पोल की तरह पतले हो, तुम्हारे बाल ऐसे खड़े हो. मतलब जब वो बंदा उस कंटेंट को देखेगा उसको जो खुद को जो ट्रॉमा होगा वो अलग. एंड देन दिस होल एंटायर आर्मी ऑफ पीपल हु सपोर्ट द रोस्टर आर गोइंग टू कम एंड गिव दैट पर्सन मोर ग्रीफ. डू यू रियलाइज हाउ मच ग्रीफ इज दैट गोइंग टू एड टू दैट पर्सन्स लाइफ? एक और चीज़ जो आई थिंक लोग नहीं समझते इज दैट अ कंटेंट क्रिएटर्स जॉब इज सो डिफिकल्ट. I don't think a lot of people understand this because they are not on that side. And I can tell you it is difficult because I have been on this side for the last 2 years. I've been an independent content creator. उससे पहले मैं 10 साल से मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में हूँ, बट मैं इंडिपेंडेंटली यूट्यूब पे 2 साल से कंटेंट बना रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ सो डिफिकल्ट. इट इज़ नॉट एन ईजी लाइफ. तुम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो, तुम्हें कॉन्स्टेंटली क्रिएटिव रहना है. टू बी एबल टू बी क्रिएटिव यू हैव टू बी इन अ गुड स्पेस ऑफ माइंड. यू आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग योर सेल्फ टू मेक न्यू कॉन्टेंट. देन द करियर इज़ वेरी वेरी अनसर्टन. तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और रिटर्न बहुत लेट और बहुत बाद में मिलता है. इफ यू डोंट हैव अ टीम, यू डोंट हैव अ सपोर्ट, सो यू आर एनीवे ओवरवेल्म्ड with a lot of work, and this career is something that could keep making you anxious because you don't generally know what the future holds for you and a lot of that. So it's not a conventional career. And added to all of this, it takes a crazy amount of courage to put yourself out there on any platform. Okay,
बीट टिकटॉक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, एक कैमरा के सामने जाकर बैठ के बात करना या फैशन वीडियोस रिकॉर्ड करना, कॉमेडी करना, कुछ भी करना, डांस करना, गाना, टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करेज. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें पता भी नहीं है कि कितना, you know, there is so much happening behind the scenes before a person even starts putting themselves out there. There's so much internal criticism always happening. There's so much happening in their heads कि उसी में से बाहर निकलकर परफॉर्म करना शुरू करना is only like one battle, is only one struggle. And then come all these negative comments and negative feedback and criticism and hate that you have to deal with. So do you think that is fair? Like, do you think that is fair to any person, good creator or a bad creator? I mean, even if he's a bad creator, trust me, he has something inside him, some amount of courage to, you know, to be able to go put that camera का record button on and make some content and post it out there. उसमें कोई तो बात है कि वो कर पा रहा है, तो वो appreciate करना बहुत ज़रूरी है, जो हम में से बहुत लोगों को नहीं आता है. हम लोगों को बहुत आसानी से, you know, लोगों के वीडियोस या बुरी एक्टिंग या बुरा डांस या बुरी सिंगिंग देख के हंसना बहुत पसंद है, वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करके उसकी खिल्ली उड़ाना बहुत पसंद है. एंड येस, आई हैव डन इट. आई हैव लुक्ड एट बैड वीडियोज इन द पास्ट एंड लाफ्ड. You know, there are those funny cringy videos जो फेसबुक पे बहुत बार शेयर होते थे. आई हैव शेयर्ड ऑल ऑफ देम. बट यार, देर इज़ वन थिंग टू शेयर दीज वीडियोज, लाफ अबाउट देम. इट्स लाइक जब तुम कोई बुरी पिक्चर देख के आते हो सिनेमा हॉल में, कोई बुरा एक्टर हो उसमें जिसने बहुत हैम किया हो, तुम उसकी एक्टिंग के बारे में बात करके हंसते हो कि ठीक है, इसने बहुत हैमिंग की थी इस सीन में. बट वो एक चीज़ अलग है, देख के हंसना और इग्नोर कर देना. बट तुम उस एक्टर को लेकर एक फुल वीडियो बनाओगे, उसकी पर्सनैलिटी की चीर फाड़ करोगे. यू आर गोइंग टू डाइसेक्ट हाउ ही लुक्स, व्हाट ही वाज वेयरिंग, हाउ ही टॉक्स, वेयर ही कम्स फ्रॉम. That is not done, yaar. But what do you even know what journey has that actor taken and what struggles has he gone through to land that one role in, I don't know, some bad movie or some bad serial. You have gone and, like, you know, like ripped him apart on a video online. मतलब कुछ roast videos जब मैंने देखे, and you know, there were comments like, बहन तुझे मुड़ के कौन देखेगा दोबारा, और पंक्चर ठीक करने वाली जैसी शक्ल है तुम्हारी. What do you think will that comment do to that person's self-esteem, self-image, state of mind? हमारे पास वैसे ही हमारे लाइफ में डील करने के लिए इतनी सारी चीज़ें, हमारे खुद के कॉम्प्लेक्सेस इश्यूज है. Why would you make content that is not going to uplift somebody, right? And होता क्या है ना, तुमने चलो ठीक है, तुमने एज अ क्रिएटर ये चीज़ें बना दी और तुमने वीडियो डाल के बोल दिया कि यार मैं पर्सनली इनको हेट नहीं करता, मैंने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था. But your audience clearly doesn't understand it. What happens after these roast videos is what has been happening in the past few days. Like all these people who ganged up on Kusha Kapila and started making hate comments on her photos and wherever on her videos. People were saying such horrible, mean things to her. All these hate comments generally have nothing to do with the creator's content. तुम अच्छा content बनाओ या बुरा content बनाओ, these hate comments are basically तुम्हारे अंदर का एंगर, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, तुम्हारे अंदर का ग्रीफ, तुम्हारे अंदर का ट्रॉमा विच यू हैव नॉट डेल्ट विथ, विच यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ, एंड तुमने उसको इस तरह से निकालना बाहर शुरू कर दिया है. इसलिए व्हाट हैपेंस, वो अंदर इतना बिल्डअप हो गया रहता है कि यू गो ऑन, यू सी अ क्रिएटर हु हैज़ मे बी नॉट डन अ ग्रेट जॉब, मे बी यू डोंट अग्री टू उन्होंने क्या कहा है, तुम जाकर उनके पोस्ट के नीचे एक पैराग्राफ भर ऑफ हेट डालकर आ जाते हो, एंड यू फॉरगेट दैट what you're saying is not so much about them, it's about you. But this is for another video altogether, this is another topic altogether. But what I'm trying to say is, all these roast videos, all these hate comments, they generate from a place of lack of empathy. हम में एम्पैथी मतलब होने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इन द एज दैट यू आर लिविंग इन राइट नाउ. आई हैव टू मेंशन कोमल पांडे's पेज हियर बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स ऑन हर यूट्यूब एंड आई सी दैट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, and the YouTube comments are so hateful that sometimes I am like, I have to give it to this girl to be able to deal with it. क्योंकि I know for a fact that 2019 she kept saying that she's dealing with anxiety, and as a person who's gone through anxiety myself and have bouts here and there even now, I know how sensitive you become when you're going through any mental health issue. You become overtly sensitive. When I was going through depression, I used to react so much for even one little thing that somebody said to me, and that was because I didn't want to. That was because I was facing a mental health issue. That was because some neurological imbalance had happened in my brain, and that's how you become. And उसके बाद when you're already going through a mental health issue, to deal with so much hate, to deal with so much negativity is not easy. So मतलब अगर तुम्हें किसी का content देखकर पसंद नहीं आ रहा है, just leave their page.
just unfollow them if you were following them. If you were liking them and now you don't like them, leave a meaningful comment. अगर तुम्हें पहुंचाना ही है, तुम्हें कैसा लगता है and how you're not relating to them anymore, say it in better words. Like I just said, a creator's job and a creator's life is any which way very, very difficult. So as an audience or as a friend or as somebody who's just landed on their page new, जब तुम उनका content देखते हो, the least you can do if you like it is cheer for them, say good things to them, uplift them, because that's what they really need. And there is this classic thing that I've heard from people time and again, तुम लोग को इतनी ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है इन्फ्लुएंसर्स को. You know, if they are in that profession, they should learn how to take feedback. They can't be reacting to everybody. They have to have a thick skin. Do you guys really think that content creators don't know all this? They know all this. They know they have to be thick skinned. They know they have to be ready to take negative feedback. They are prepared for it. पर उसके बाद भी जब वो चीज़ होती है ना, it's not very easy to take it, yeah. And it also depends on your space of mind ना. मतलब एक time था when I did not just give a damn about anybody writing anything on my page. I did not give a damn because I was in a totally different space of mind. But right now with this pandemic going on, with, you know, mood swings here and there, sometimes I read something even, you know, छोटी मोटी चीज़ लिखी होती है, तुरंत want to go and give it back because I'm like, who is this person landing upon my page and writing some shit, and you know, like if you don't want to watch it, don't watch it. So I give it back sometimes. And then I have had a friend or two saying, you don't have to react to it. I understand I don't have to react to it, but do you understand my state of mind then? मतलब next time you're saying something to somebody online or you're typing something about somebody on their page, उसको पढ़ के सोचो कि, you know, is this going to help that person's state of mind? Is it going to cheer them up? Is it going to lift them up? Is it going to add value to their life? And if it is none of these things, then don't say it. This whole insensitivity, this whole lack of empathy जो online बहुत दिखती है, hate comments में, roast videos में, this is a big problem I have, and we are already living in a world that has so many problems that we can't become problems for each other. मतलब अगर हम लोग एक दूसरे के लाइफ में problems create करने लग गए तो बड़ी problems का क्या होगा? These are really small things. कौन कैसा कंटेंट बना रहा है, कौन कैसे वीडियोस बना रहा है, कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, किस कलर की लिपस्टिक लगा रहा है, किसके ब्रा स्ट्रैप दिख रहे हैं, किसकी शक्ल कैसी है. These can't be our problems in 2020 यार. We have bigger problems in the world out there. The moral of the story is we need to be a little more empathetic, not just to our friends, not just to our family, but just to everybody else out there in the society and to strangers on the internet. Just क्योंकि हम उनको पहचानते नहीं है, personally जानते नहीं है, does not give us the right or the ticket to make their lives hell. That's all I want to say about the roast culture and the hate comments that are going on the internet. तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना. And if you agreed with what I said, you should share it with your friends and everybody that you want to. And yeah, on that note, I'll go and see you guys real soon right here. You take care. Bye bye.